सवाल जवाब का सेशन हम आखिर में करेंगे। परसों लेक्चर नंबर 2 है, उसको ज्वाइन करने के लिए अटेंडेंस व्हाट्सएप पर लगाना मत भूलिएगा। ओवर टू यू मिस, यू कैन स्टार्ट। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। कुरत इज़ हियर एंड आई विल बी योर मेंटोर फॉर दिस कोर्स। द वेरी फर्स्ट थिंग, हम अपनी आउटलाइन को देख लेते हैं। आउटलाइन देखना या आउटलाइन पढ़ना ज़रूरी क्यों है? ताकि आपको पता चले कि इस कोर्स में आप क्या पढ़ने जा रहे हो, इस कोर्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इस आप में कौन सी ऐसी कमी है जिसे इस कोर्स पढ़ने के बाद आप ठीक कर लोगे। ठीक है। और हमारा कोर्स जो है 12 लेक्चर्स का होगा। आफ्टर दैट हमारे 3 लेक्चर्स जो हैं वो क्वेश्चन आंसर सेशंस के होते हैं और डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं जिसमें आपका माइक अनम्यूट करके आपको क्लास के सामने पार्टिसिपेट करना होता है। अच्छा जी, हम लेक्चर नंबर 1 की बात करते हैं। इंट्रोडक्शन टू द कोर्स लेंगे। कोर्स में हमने क्या पढ़ना है ताकि हमें पता हो, हम क्लियर हों कि हम इन पॉइंट्स को इम्प्रूव करेंगे तो क्या होगा, हमारी इंग्लिश जो है वो बेहतर हो जाएगी। अच्छा जी, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कोर्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ेंगे कि लैंग्वेज के ऐसे 7 पिलर्स कौन से हैं जिन्हें सीख के हम इंग्लिश लैंग्वेज अपनी बेहतर कर सकते हैं। सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 पढ़ेंगे हम। ओके, उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या है कि हमने अ, हर वर्ड को किस तरह से बेहतर साउंड करना है, एक लफ्ज की एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है। ठीक है, जिस तरह आप कहते हैं डे, एक सिंपल है डे, हम कहते हैं कि जी टुडे, ठीक है, दैट्स डे। ये गलत, हम गलत पढ़ते हैं। जैसे आप वाज पढ़ते हो, वाज को वेज पढ़ते हो, जो गुलदान होता है जिसमें हम फूल लगाते हैं। तो दैट्स व्हाई प्रोनाउंसिएशन इज काइंडा इंपॉर्टेंट। हम देखेंगे कि व्हाई इट्स कंपल्सरी टू लर्न द साउंड्स ऑफ वर्ड्स। साउंड्स ऑफ वर्ड्स सीखने हैं, लफ्जों के साउंड सीखने हैं, तो वो क्यों कंपल्सरी है इंग्लिश लैंग्वेज में। फिर हम देखेंगे टंग ट्विस्टर्स। टंग ट्विस्टर्स एक्चुअली कुछ सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपकी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, आपकी प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अब वो टंग ट्विस्टर्स क्या हैं, उन टंग ट्विस्टर्स को किस तरह से प्रैक्टिस करना है, कौन से वो जुमले हैं, उनकी प्रैक्टिस करने से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये सारा कुछ हम सेकेंड लेक्चर में पढ़ेंगे। आफ्टर दैट हम देखेंगे व्हाट आर द फॉर्मल वेज टू स्पीक इंग्लिश। देखो, एक लैंग्वेज का जो फ्लुएंट स्पीकर होता है वो एक बात बहुत सी वेज में कह सकता है, बहुत से तरीकों से कह सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने 3 डिफरेंट लोगों को थैंक यू कहना हो तो मैं फर्स्ट को कहूँगी थैंक यू सो मच। ठीक है, अगले को मैं कहूँगी आई रियली अप्रिशिएट इट, क्या आपने मेरी हेल्प की या जो भी आपने किया, आई रियली अप्रिशिएट इट। या आगे से मैं अगले पर्सन को कहूँगी मच oblige या thanks a million और so many other ways। ठीक है, अब वो सारी वेज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। फिर हम सेल्फ इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 पढ़ेंगे। प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेस के लिए हम साउंड्स ऑफ वर्ड्स को पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 3 में हम देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। लैंग्वेज में एक लफ्ज जो है, किसी लैंग्वेज में वो क्या रोल प्ले कर रहा है, उसकी बेसिस पे डिवाइड किया गया है। लिंग्विस्ट ने वर्ड्स को डिवाइड कर दिया है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हैं वो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। टंग ट्विस्टर्स क्या हैं? टंग ट्विस्टर्स का आपको मैंने पहले भी बताया कि कुछ जुमले हैं जिनकी हम रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारी इंग्लिश बेहतर हो जाए। आफ्टर दैट फॉर्मल बेस ऑफ स्पोकन इंग्लिश में हम देखेंगे हाउ टू से वेलकम, और वेलकम एज एन आंसर टू ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड क्या है? थैंक यू, जब कोई बंदा आपका शुक्रगुजार हो, और वेलकम एज अ हॉस्पिटैलिटी जेस्चर। तो दोनों को हमने किस तरह से करना है। प्रोनाउंसिएशन एक्सरसाइजेज में हम साउंड्स ऑफ वर्ड्स पढ़ेंगे कि सर्टेन वर्ड्स के साउंड अगर हम ठीक कर लें तो हमारी इंग्लिश जो है वो ऑटोमेटिकली बेटर हो जाएगी। इन लेक्चर नंबर 4 वी विल टॉक अबाउट इंग्लिश ग्रामर इन यूज। वी विल स्टडी व्हाट इज नाउन, व्हाट इज प्रोनाउन एंड व्हाट इज वर्ब in depth, and plus we'll also study their use in English language, how we can use noun, pronoun and verb in our everyday language, or where we have to use these. After that, we'll study tongue twisters in formal ways of spoken English. We'll talk about how to accept something in a formal manner, or if someone is saying yes, how we can like how we can say yes to some opportunity, how we can say yes in different situations. After that, we'll also do pronunciation practice. In lecture number 5,
Our focus will again on English grammar in use. We'll study parts of speech like adjective, adverb, and prepositions in detail. And we also study how we can use in our these parts of speech in our everyday language. After that, we'll study introduction to the tenses. All of us knows that on the base of time, when something is going to happen, something is done, or something is like processing at the moment. So we divided sentences on that base, on the base of verb, and those known as tenses. And we'll also study how to reject something in formal manners, or what are the ways to say no. And all of us knows that saying no is an art. Like if we have to reject something, how we can reject something in polite manner. After that, we'll also study our pronunciation exercise, which is sounds of words. In lecture number 6, we'll talk about English grammar in use and freelancing. Those who used to say that why after learning English language, you're not supposed to do freelancing. So let me clear one thing, that your freelancing success 70% depends upon your spoken abilities. How fluent you are, how beautifully you can talk with your client. So when we are working with international client, we have to be very polite, we have to be very formal, but that's not the case of Pakistani clients. माजरत के साथ हमारे पाकिस्तानी clients जो हैं वो बहुत so called हैं. जब आप उनके साथ काम कर रहे हो तो पहले वो आपके साथ बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन जब हम उन्हें कहेंगे कि हमारी पेमेंट्स क्लियर कर दें. I was just in a meeting and that person was like कि क्या हुआ भाई, 30 दिन ही ऊपर गुजरे हैं ना. So, but when we are working internationally, और कहीं भी हम काम कर रहे हैं, we have to be polite. So, freelancing में use क्या है? That your 70% freelancing success depends upon spoken English communication, or how you are talking to someone. In parts of speech, we'll study conjunction and interjunction and the use in spoken English. After that, we'll study prefix and suffix and their use in English language, then in formal ways of spoken communication. We'll study how to ask for permission. After that, we'll study what are the careers as a good communicator. कि एक बंदा अच्छा कम्युनिकेटर है तो वो कौन कौन से करियर्स को ज्वाइन कर सकता है. फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म हम देखेंगे फाइबर को. प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस हमारी जो है शिफ्ट हो जाएगी वाया डायलॉग. वाया डायलॉग हम क्यों प्रोनाउंसिएशन प्रैक्टिस करते हैं? क्योंकि बेटा डायलॉग से हमें रोल प्लेइंग आती है. रोल प्लेइंग है. व्हाट इज रोल प्लेइंग? इफ यू आर इन सम सिचुएशन, you have to respond someone, or you have to initiate a conversation, then you have to know how you can adjust yourself in certain role. For example, if you met someone at a coffee shop, अब आपको पता ही नहीं है कि सैल्यूटेशन क्या है, आपने किस तरह से उस बंदे से बात करनी है, आपने किस तरह से उसकी रोजमर्रा जिंदगी के बारे में पूछना है. वो फॉर्मल कन्वर्सेशन है, वो इनफॉर्मल कन्वर्सेशन है. आप किसी फॉरेन कंट्री में गए, आपका कोई दोस्त बन गया, तो आप वो कैसे करेंगे? ठीक है. तो for that practice we have to study dialogues, and we have to practice dialogues. So after that you can adjust yourself in that kind of environment. After that, in lecture number 7, we study tenses in detail. We'll study present tense and past tense. We'll study how to start a conversation, and we'll also study freelancing platform, that is LinkedIn. Why we have to study LinkedIn? As all of us knows, LinkedIn is a platform where we can find appropriate top-notch jobs actually. So usually we say that freelancing is a YouTube of professional people, sorry, Facebook of professional people. So we have to make a good profile so we can get good clients there. After that, we'll study dialogues as well. In lecture number 8, we'll study tenses and freelancing. We'll study future tense. We'll study how to end a
conversation on a positive note. किसी से के साथ हमने conversation खत्म करनी है. How we can end that conversation on a very positive note. And we'll study also auxiliaries in English language. Auxiliaries in English language जो कि आपके helping verb हैं. और आप में से बहुत से लोगों की एक general misconception जो आपके courses पढ़ाते हैं मुझे पता चली है कि आप लोग helping verb को modal verb भी कहते हैं. But that is not true. Helping verb auxiliaries की एक type है. ठीक है, एक्सिलरीज की एक टाइप है जिसे हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं. ओके, आफ्टर दैट इन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स विल कवर Amazon एंड YouTube. ओके, vocabulary building हम पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे types of sentences. We'll study what are the strategies of learning new words. Vocabulary क्या है? Vocabulary is the range of words we know in a language. So we'll study how we can learn new words, and we'll also study what are the synonyms and what are antonyms. Yes, synonyms words with the similar meaning, and antonyms words with the different meanings, and how we can use context to understand a new word. What is context actually? Context are kind of, you can say, neighboring words. If you understand neighboring words, how you can find out meaning of, like a meaning of that word we are not aware of. Okay, so using context, if we are talking about this line, if we are not like we don't know what is the formal meaning, so we can use this word or this line to understand meaning of formal. This is the context actually. And after that we'll study how to show your sadness or grief in English language, and our pronunciation practice will also via dialogues. So in lecture number 10, we'll talk about the relationship between listening, reading, and speaking. As you know, all these three skills are like interwoven. What does it mean by interwoven? So simply we can say all these three skills are interconnected. So we'll study what are the active listening skills, why listening is important in spoken English. And after that, we'll study how to respond effectively in conversations. We'll also study group discussions, uh, and we'll study how we can practice listening and speaking skills with others. And then after that, we will study how to build a connection, or how to understand the connection between reading and speaking. Acha, there is an example. All of you knows that writers can use a word in different meanings. So, via reading, we usually learn how to use a word or how to use a sentence in different situations. So that's why reading is important. We'll also study how to improve reading comprehension. Reading comprehension is also part of your competitive exams like CSS and PMS. So we'll also study in this as well. And after that, we'll practice few exercises of reading aloud with proper notation and pronunciation. We'll also study vocabulary. And like in our course, there are two kind of vocabularies, that everyday words I'm giving to you, or the everyday dialogues I'm giving to you. But also we'll study a formal vocabulary as well. What are the famous words and phrases in English language? We'll also study idioms and slangs. What is slang? Like the language of common people. Okay, for example, like on social media, we say she's looking cool or she's looking gorgeous. So, what is the worldly meaning of cool? That is like ठंडा. ठीक है, उर्दू में हम कहते हैं कि ठंडा, cool. And what is in our social media slang? That is cool means is gorgeous. So we'll study all these differences as well. In lecture number 11, we'll talk about how we can explain a topic perfectly. After that, we'll study formal ways of spoken English, how to show your excitement in English. And speaking practice, we'll study Q card, which is question card of your IELTS exams, or the Q, there is another spelling for this, CUEQ. So we'll study this Q card as well, which is the module of your IELTS exam. In lecture number 12, we'll talk about interviews and how
we can prepare for job interviews, what are the common questions, and how we have to answer them. We'll study body language and communication skills in job interviews. And after that, in final pronunciation, sorry, in your final presentation, I'll check your communication abilities, and we'll also take our course review. And after that, I'll tell you in the next step how you can continue your language improvement journey. Okay, so next let's talk about aims and objectives of our spoken English communication course. Number one is we want to develop your communication skill. So the primary focus of this course is to help you to improve your spoken English communication. Like your ability to speak fluently and develop coherence in your language, and after that, how you can speak confidently in different situations. So actually, we want to make you a good speaker. After that, we'll work on your pronunciation and intonation. What is intonation? Intonation is gaps, stress, unstress things, like where you have to put stress, where you have to put very little stress. So we'll also study these. Actually, in English, usually people say pronunciation. But actually, I'm not reading, I'm delivering you a lecture. So usually you'll get the recording. So just don't worry about it. So actually, what is enhancing pronunciation? Usually एक लफ्ज़ हमें इस्तेमाल किया जाता है, that is accent reduction. ठीक है, इसके लिए एक word use किया जाता है, accent reduction. So that is pronunciation. Did you get it? Okay. आफ्टर दैट हम बिल्डअप करेंगे वोकैबुलरी और अपनी उसकी एक्सप्रेशंस की रेंज को बढ़ाएंगे कि हम हम किसी चीज़ को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको हम किस तरह बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर हम लिसनिंग कम्प्रीहेंशन पे काम करेंगे ताकि सुन सुन के आप लोगों की इंग्लिश बेहतर हो। कल्चरल अवेयरनेस देखेंगे, हम कॉन्टेक्चुअल यूज़ देखेंगे कि क्या लाइक फ्यू वर्ड्स आर अप्रोप्रिएट इन सर्टेन कल्चर्स बट फ्यू वर्ड्स आर नॉट अप्रोप्रिएट इन सर्टेन एनवायरनमेंट। लाइक अगर हम बहुत से लफ्ज़ ऐसे हैं जो हम पाकिस्तानी एनवायरनमेंट में अगर यूज़ करें तो लोग मुंह खोल के हमें देख रहे होते हैं कि ये क्या कह दिया। सो we'll also study these things. What are our objectives? Our objective is enhancing your conversational fluency and your presentation skills, कि आप किस तरह बेहतर तरीके से इंग्लिश में बात कर रहे हैं। हम टेलीफोनिक और बिजनेस कम्युनिकेशन पे भी बात करेंगे। पब्लिक स्पीकिंग का इंशाल्लाह आप में कॉन्फिडेंस भी आएगा। हम देखेंगे करेक्ट ग्रामर और सिंटेक्स क्या है, एक्टिव लिसनिंग स्किल्स क्या हैं, आपने कॉलिकोलिज्म और एडिमेटिक एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए किस तरह से इंग्लिश बेहतर बनानी है, फीडबैक खुद को किस तरह देना है, सेल्फ असेसमेंट कैसे करनी है, कल्चरल सेंसिटिविटी क्या है, आप एक कल्चर में कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरे में नहीं कर सकते, तो आप वो किस तरह से उन्हें बेहतर बनाएँगे, रियल लाइफ सिचुएशन में हम इंग्लिश किस तरह से बोल सकते हैं। आफ्टर दैट बच्चों, अब हमारे पास है 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन क्या हैं? दीज़ आर द 7 पिलर्स ऑफ लैंग्वेज, जिन्हें इम्प्रूव करके हम अपनी लैंग्वेज जो है उसे बेहतर बना सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज क्लैरिटी। देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ क्लैरिटी, दैट योर सेंटेंस शुड बी ऑडिबल टू द अदर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 100 लोगों में बोल रहे हैं, मैं 100 लोगों की क्लास को पढ़ा रही हूँ, तो माई वॉइस विल बी फार मोर लाउडर देन दिस, कि मेरी आवाज़ इससे बहुत ज़्यादा ऊंची होगी। तो दैट इज़ अ क्लैरिटी। और अगली चीज़ है कि आपकी जो बात है उसमें कहानियाँ ना हो और वो अगले बंदे को समझ आ जाए। कंसाइजनेस, आपकी बात बहुत लंबी ना हो, एक अप्रोप्रिएट लेंथ की हो, कि आपने बेहतर तरीके से अपने अल्फाज को एक्सप्लेन कर दिया है। कंसिडरेशन क्या है? कि आप ऐसी बात ना करें, कंसिडरेशन ये है कि आप ऐसे बात ना करें कि अगले बंदे को समझ ना आए। फॉर एग्जांपल, अगर आप नर्सरी क्लास में बात कर रहे हैं तो आप एमए वाली वोकैबुलरी ना यूज़ करें। कंप्लीटनेस, वट एवर यू आर सेइंग शुड बी कंप्लीट, वो पूरा मीनिंग कन्वे कर रहा हो। खटसी क्या है? खटसी ये है कि आप ऐसी बात ना करें कि जिससे अगले बंदे के जज्बात मजरूह हों, अगले बंदे का दिल बुरा हो। ठीक है? कॉन्क्रीटनेस, जब हमारी पहले फांसी आ जाते हैं तो हमारी लैंग्वेज क्या है?
कॉन्क्रीट हो जाती है। कॉन्क्रीट क्या है? सॉलिडनेस आ जाती है कि जो बात हम कर रहे हो तो खूबसूरत हो। आफ्टर दैट, करेक्टनेस, योर लैंग्वेज शुड बी ग्रामेटिकली करेक्ट। आप देखें कि इतनी क्लैरिटी, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कंप्लीटनेस, कर्टेसी, ये 5 जो सीज हैं ये ह्यूमन इमोशंस के बारे में है, ठीक है? और इन्हें सबको अचीव करने के बाद हमारी लैंग्वेज में कॉन्क्रीटनेस आती है। और ये जो पहले 6 सी हैं ये मिलके क्या बना देते हैं? हमारी लैंग्वेज को करेक्ट बना देते हैं, ठीक है? अच्छा जी, अब हम पढ़ते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन, कि हमने किसी जगह पे जाना है तो खुद को किस तरह से इंट्रोड्यूस कराना है, ठीक है? अच्छा, सेल्फ इंट्रोडक्शन की हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है? दैट कैन बी इन योर क्लास, दैट कैन बी एट अ जॉब इंटरव्यू, दैट कैन बी एट सम न्यू हॉबी, दैट कैन बी सम एट सम लार्ज इवेंट, और मे बी इन फ्रंट ऑफ समवन, कि किसी के सामने भी हमें आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना पड़ सकता है। हम ग्रीटिंग्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले एक जर्नल ग्रीटिंग आती है। हमें एक ऐसी ग्रीटिंग की ज़रूरत है जो किसी रिलीजियस बैकग्राउंड से बिलोंग ना करती हो। हमें एक ऐसी ग्रीटिंग की ज़रूरत है जो जिसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। हमें जिस तरह से पॉलिटिकल बैकग्राउंड की आपको मैं एग्जाम्पल देती हूँ कि जिस तरह पीपल्स पार्टी वाले जब आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे को देख के ऊंची सी आवाज में कहते हैं जी ये भुट्टो, तो वो भी आगे शायद नारा लगाते हैं जिंदा है ऐसे करके कोई नारा लगाते हैं। तो ये उनकी ग्रीटिंग है, ठीक है? या हम अस्सलाम वालेकुम कहते हैं तो दूसरा बंदा हमें वालेकुम अस्सलाम कहते हैं। तो हमें एक ऐसी ग्रीटिंग की ज़रूरत है जो किसी रिलीजन से बिलोंग ना करती हो। हमें ऐसी ग्रीटिंग की ज़रूरत है जो कि जर्नल हो, किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से ना मैच करती हो। तो वो कौन सी ग्रीटिंग है? दैट इज़ हेलो। और देयर इज़ अ मिसकॉन्सेप्शन इन आवर सोसाइटी कि अगर कोई बंदा आपको हेलो कह रहा है तो उसके आंसर में आपने हाय कहना है। ऐसा नहीं है। इफ समवन इज सेइंग हेलो, यू हैव टू से हेलो। इनफॉर्मल सिचुएशन, आप अपनी यूनिवर्सिटी में, आप अपने कॉलेज में हैं, आप किसी बिजनेस मीटिंग पे हैं, तो आप क्या कहेंगे? आप उसे हेलो ही कहेंगे। ओके, फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग आ जाता है। गुड मॉर्निंग सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आप गुड मॉर्निंग कहते हैं। आफ्टर दैट 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप गुड आफ्टरनून कहते हैं। फिर उसके बाद जब तक आप नहीं सोते तब तक आप गुड इवनिंग कहते रहते हैं। अब आप गुड नाइट क्यों नहीं कहते? जब अब रात भी हो गई है तो गुड इवनिंग कह रहे हैं, हम गुड नाइट क्यों नहीं कह रहे? क्योंकि गुड नाइट एक कन्वर्सेशन एंडर है। गुड नाइट का मतलब है कि अ, अब बस भाई हम सोने लगे हैं, हमारी बात जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है? और गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग की जगह ऑस्ट्रेलिया में क्या कहा जाता है? गुड डे कहा जाता है। अच्छा, अब ये है कि हर वक्त हमने ऑफिस में तो नहीं रहना, हर वक्त हमने बाहर तो नहीं रहना, हर वक्त हमने प्रोफेशनल एटमॉस्फेयर में तो नहीं रहना। तो कुछ तब की भी तो ग्रीटिंग होंगी ना। तो जैसे हाय है, हे है, व्हाट्सअप है या है, व्हाट्स गुड है। तो ये सारी क्या है? ये इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स हैं, ठीक है? और ये कहाँ है? ये व्हाट्स गुड जो है ये अमेरिकन है, ठीक है? और हैया जो है वो एक स्लैंग एक्सप्रेशन है, हाय हाउ आर यू, ठीक है? ओके, अब आगे हम बात करते हैं कि हमने अपना नाम किसी को किस तरह बताना है। हम कह सकते हैं आई एम दिस, ठीक है? या अगर हमने उसे थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस करना हो तो हम कह सकते हैं आई एम आई और एम को आपस में मिला के आई एम। अच्छा, फिर आगे हम कहते हैं माई नेम इज़ अ बड़ी बेसिक सी चीज़ है। अगर आपको लगता है कि हर वक्त आपको माई नेम इज़ ही जहन में आ रहा है तो आप उसे थोड़ा सा एडवांस्ड कर लें और आप उसे कहें माई नेम्स। आफ्टर दैट आप कह सकते हैं, अगर आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं दिस इज़, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल हेलो दिस इज़ खुरत। जब आप फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं, जब आपने ये बहुत ज़्यादा आपके काम आएगी जब आप कॉल सेंटर्स में अगर जॉब करेंगे, तो ये चीज़ बहुत बेहतर है। हेलो दिस इज़, आगे आप अपना नाम बताएंगे और ये बहुत कंसिडर की जाती है और ये आपसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है जी? ऑलराइट स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।
हाँ जी, टेंसेस एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है जी बेटा हम टेंसेस करेंगे। एनीथिंग जी एल्स बच्चों को जी क्वेश्चन? स्टूडेंट, सवाल कीजिए। सवाल जब आपका सेशन स्टार्ट है, ऑल ऑफ यू प्लीज।